Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. आपको भी good morning. Thank you, sir. Good morning, sir. Sir, so I myself, Ratan Shah, I am from BITCOMM Technologies. We are here for this webinar. We are presenting VOIP-based train control communication system based on RDSO specification TC99. So before going to the presentation, I would like to let you know about our company a little bit. So BITCOMM, we are an Indian company. Our company headquartered at Noida. We have founded this company in 2011, so almost more than 10 years in the Indian market. We have our R&D house and software, technology, product development, everything we do here in Noida. And we have a team size of around more than 50 people. Mostly people are from our technical background. We have extended development center in Nagpur, where we do the developments, software development. We are a ISO 9001 and ISO 27001 certified company. Since there are a lot of digitization and projects in terms of software and hardware happen, so we are accredited with CMMI level 3 company, so which will assure you the maturity quality of the products which are being developed and are deployed in the field. Our major focus in working for Indian Railways for signaling and telecom departments. Also, we have a lot of development and products and projects we do for defense. So, about the solutions we have, like network management solution, GIS-based, asset management. Especially in communication, we have VOIP, soft switch, LTE, GSM, Tetra related interfaces and applications. Optical fiber network management system. Then we have train-borne communication integration, like in the communication we have VoIP-based train control communication. सर जी आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है. सर बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? आ रही है सर, आ रही है. भवानी सिंह Yes, sir. आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर. आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है. थोड़ा हिंदी में समझाएंगे सर? हाँ सर, ठीक है. सो मैं अभी बेसिकली जस्ट ब्रीफ दे रहा था अबाउट हमारी कंपनीज के अबाउट हमारी कंपनी. IoT बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ये बेसिकली सिग्नलिंग के लिए इंडियन रेलवेज के लिए हम कर रहे हैं, जिसमें हम पॉइंट मशीन, ट्रैक सर्किट, सिग्नल, आउटडोर गियर्स, केबल्स, इनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके आपको एक प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज अ सेपरेट सोल्यूशन फॉर सिग्नलिंग एज वेल एज टेलीकॉम एसेट के लिए भी हम ये यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस फोरम में मोस्टली टेलीकॉम से इंजीनियर्स हैं. सो टेलीकॉम में भी आप IoT बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को यूज कर सकते हैं. सो और उसके बाद मोबाइल वर्कफोर्स, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, अलग अलग सॉल्यूशंस है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हमारे बिटकॉम में. हमारा स्पेशलाइजेशन रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेज सर्विसेज, कस्टमाइजेशन, पोर्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट, मेंटेनेंस. कुछ कस्टमर्स स्पेशली इंडियन रेलवेज में हमने NCR, NWR, NER, साउथ में एंड ऑल ओवर इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हम काम करते हैं. रेलटेल का हम बिजनेस पार्टनर है कुछ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस के लिए. डिफेंस, इंडियन नेवी, दिल्ली मेट्रो इज आल्सो एक हमारा मेजर कस्टमर है, जिसमें हम उनका इंटायर सिग्नलिंग टेलीकॉम का एसेट, सिग्नलिंग टेलीकॉम का प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं. देन मोनोरेल में ऑनबोर्ड ट्रेन में जो आपका ड्राइवर गार्ड कम्युनिकेशन है, PAPIS सिस्टम है, ये सारे सॉल्यूशंस हम रेलवेज एंड मेट्रोस के लिए करते हैं. So now next is the focus right now is presentation का हमारा VoIP based control communication का रहेगा. So before that आज के डेट में आपके पास जनरली जो कंट्रोल कम्युनिकेशन है मोस्टली एनालॉग सिस्टम है, लाइक RDSO का एक TC60 स्पेक है जो 4 वायर कंट्रोल अरेंजमेंट है DTMF सिग्नलिंग के बेस पे जो कॉर्ड पे होता है.
इसमें आपका ओमनीबस सर्किट है, कंटिन्यूअसली 4 वायर और 2 वायर पे एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं ऑल द टाइम। इसके कुछ फीचर्स इसमें ऐसे है कि आप 99 स्टेशन ही कॉल कर सकते हैं, 2 डिजिट का नंबरिंग प्लान है और हार्डवेयर स्पेसिफिक है, आपने जो फिक्स कर दिया वही चीज आपको डायल करना होता है। एंड देन आपका जो कंट्रोलर और बेस स्टेशन के बीच में ओमनीबस सर्किट्स है। सो जैसे आप मतलब इसके बारे में आई थिंक आई डोंट हैव टू गिव मोर डिटेल्स, आपको इसके बारे में पता है। देन दूसरा आपका सिस्टम है OFC बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं आप, जो कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए 66 RDSO का स्पेक है। इन दिस स्पेसिफिकेशन सिमिलरली मतलब एनालॉग साइड है मोस्टली, जो एंड अदर देन आपका अदर देन योर OFC backbone, all other equipments in that we have a mostly analog communication. In this आपका जो 4 टेलीफोन 4 नंबर ऑफ टेलीफोन्स, हेलो okay, so 4 number of telephones can be connected at base stations, 1 to 1. I mean not only so that is an advantage जो आपका TC66 में है। TC60 के ऊपर आप सिलेक्टिव कॉलिंग फैसिलिटी है कंट्रोलर से बेस स्टेशन में। इन दैट यू हैव सम LED alphanumerical display and ringtones is better. So this system TC66 is better in terms of the performance and other with respect to TC60. So two major communication control communication you have today in Indian Railways. जो बैकबोन इन OFC जो आपका STM and MUX है उसका आप use that OFC. So if I see these two systems and then हमें ये if we see why VOIP based train control communication could be very effective and useful for you, इन दोनों सिस्टम का जो लिमिटेशन है उसको हमने and in fact RDSO ने एनालाइज किया है and then ये solution डिजाइन किया गया है. So generally जो existing DTMF based signaling है and omnibus circuit analog है, उसके limitations ऐसे है कि this is very hardware specific. I mean अब जितना ही फीचर आपने डाले हैं वही फीचर्स आपके चलेंगे, बट फ्यूचर में कोई नया एडिशनल फीचर या चेंजेस मॉडिफिकेशन चाहिए, in that case you have to do the modification in the hardware and again go through the cycle of all the certification and testing. Second is mostly control communication system used in railways, these railways. But if you see the way station equipment in this two, ये दो जो आपका TC60 and 66 है, वो cannot be interfaced with railway exchange without manual intervention. So that administrative call from headquarter can be done. So that is one of the requirement which we can take care in VOIP. So जब मैं VOIP में explain करूँगा, I will try to explain you this. Then the station master table, you have today so many phones because all phones are directly connected to the circuit. But if you, it is very difficult for the station master to manage. सारे इतने सारे phones को manage करना उनके लिए बड़ा difficult. So उसमें कोई visual इंडिकेशन नहीं होता है कंट्रोलर को जब भी कोई बेस स्टेशन का डायलिंग होता है, बिकॉज उनके लिए हमेशा कंट्रोलर सीज दैट दीस स्टेशंस आर ऑलवेज कनेक्टेड. सो देयर इज नो विजुअल इंडिकेशन वेदर द बेस स्टेशन इक्विपमेंट इज डायलिंग और इट्स इन द कॉल और इट्स आउट ऑफ द कॉल. the impedance matching basically जो voice quality हमारी है, we have some point of time because of the voice quality the impedance matching बहुत important है, so that voice quality maintain कर सकते हैं. डिजिटल सिस्टम में इसको थोड़ा सा हमने अलग तरीके से इसको मैनेज किया है. These two existing systems have limited to the number of stations. हेलो रतन सर. yes सर मेरी आवाज आई सर अभी? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ओके आप कंटिन्यू करें सर. ओके, थैंक यू.
So like there is no dialing facility for these telephones at wayside to wayside या कुछ और आपका requirement होती है तो आप कर नहीं सकते. Fault management today आज कोई फोन खराब हो जाता है स्टेशन का, so it is very difficult to know, मतलब प्रोएक्टिवली पता नहीं चलता. जब वो बात करते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, देन ओनली आपको पता चलता है कि हाँ यार ये फोन में कुछ प्रॉब्लम है. बट हमें आज के डेट में डिजिटल सिस्टम है तो वी हैव अ मैकेनिज्म टू नो. देन नॉइस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है. कोई भी एक स्टेशन अगर नॉइस करता है तो एंटायर सेक्शन में नॉइस आ जाता है और उस स्टेशन को अब बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, फिजिकली आइसोलेट करना पड़ता है. बट जहां तक हम VoIP सिस्टम का को देखेंगे तो उसमें ये प्रोविजन होगा. देन वॉइस रिकॉर्डिंग की अगर बात करते हैं, वो एक कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग प्रोसेस है. उसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बेसिस में जाके सर्च करना पड़ता है. बट अगर इसको हम नेटवर्क में ले आ सकते हैं तो आप रिमोटली कहीं से भी उस वॉइस रिकॉर्डिंग को रिट्रीव कर सकते हैं. So these are some of the limitations which we have in the DTMF based system, TC60 and 66 and earlier systems. So the VoIP based TCCS has been designed by RDSO by seeing all these limitations. उसके बेसिस पे TC66 TC99 specs बना है. लिटिल बैकग्राउंड इज 2012 में ये स्पेक स्टार्ट हुआ था एंड 2015 में RDSO ने एक ट्रायल प्रोजेक्ट निकाला था नॉर्थ NER में, बनारस डिवीजन में. सो फॉर्चुनेटली हमने वो टेंडर पार्टिसिपेट करके हमने उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया था. सो पहला जो स्पेसिफिकेशन था, जब हमने फील्ड में ट्रायल किया RDSO के साथ मिलके, देन हमने काफी सारे चेंजेस एंड फील्ड के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किए एंड देन चेंजेस किए. फिर RDSO ने ये लेटेस्ट 2018 में नए चेंजेस के साथ ये स्पेसिफिकेशन दिया है. सो मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आई विल ट्राई टू टच अप ऑन द पॉइंट्स की वेयर वी फाउंड सम इश्यूज ड्यूरिंग द लास्ट ट्रायल. अबाउट इफ यू सी दिस TCCS वॉइस सिस्टम, इसमें आपको इसमें जैसे एक सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट है. इट हैज ए रिच कम्युनिकेशन सिग्नलिंग. लाइक DTMF में इस ओमनीबस है एंड DTMF पे चलता है. देयर इज नो सिग्नलिंग एज सच, बट VoIP सिस्टम में देयर इज ए सिग्नलिंग कॉल्ड SIP, सेशन इनिशिएटेड प्रोटोकॉल. VoIP का एक मेजर सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है. सो दैट ऑन दैट बेसिस बेसिकली दिस एंटायर signaling mechanism is inbuilt. So event recording is possible, monitoring and management is possible since it is a digital system. This system has a centralized server and then that application centralized server will take care of the entire division के जितने भी phones है, जितने भी base stations है, controllers है, वो सारे को as a centralized switch, VoIP switch समझ लीजिए. You can think that as a VoIP switch, and it basically other stations works as a subscriber. So it's a centralized mechanism, and this is a packet based switching. So okay, so this architecture will give you a more idea ki how the VoIP solutioning is implemented and deployed. So the topmost portion, if you see, that's a centralized location, maybe divisional headquarter, जहाँ पे आपका मेन कम्युनिकेशन सर्वर है एंड देन यू हैव so this is a main communication server which is the heart of the system. This is on IP and here we have all the switching and configuration of the entire network. So likewise आपका हेडक्वार्टर में दूसरा जो है कंट्रोलर्स है, लाइक सेक्शन कंट्रोलर, टेस्ट रूम कंट्रोलर, देन देयर इज ए प्रोविजन आप इंजीनियरिंग कंट्रोलर, इमरजेंसी कंट्रोलर, देन आपका पावर एंड अदर कंट्रोलर्स के लिए ये मैकेनिज्म पॉसिबल है. फॉर दैट आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है. आप एक एक कंट्रोलर यू कैन ऐड एंड कनेक्ट्स टू द
main server. So these are the subscribers. जितने भी controllers है or whatever base station phones, all these are subscribers to the main communication server. And then you have a emergency gateway and before that then you have a NMS. NMS में network management system का जो एक main server है जो control में होता है, and then you have a client, NMS client, from where you can see and manage the entire network. You can see the status of all the equipments connected in the network, like station wise and headquarter wise, जो भी whatever health of the equipments are there are real time visible. So if anything goes wrong, the color gets changed, and in NMS you get to know कि मेरा ये base station down हो गया है. So that's why this NMS is there. Then you have a recording server and the client machine for recorder. So entire communication record होता है आपका इस recording server में. So like मैंने जैसे I said कि it's a SIP based signaling. So station master or wayside का जो communication, whatever communication happens, it has a events. So the caller ID, who is calling and what is the conversation happening, that is recorded with the help of data. I mean caller ID, date, time, everything. Today in voice recording you have the time based recording, and you have to listen to the conversation to know कि कौन से station ने बात किया था. But if you want to search any particular station, आप ये because of the voice recording आपका centralized and IP based है, this is possible. Then you have a event notification gateway. Event notification gateway, what it does is whatever messages, NMS is basically detecting the health of the subscribers, and this event notification gateway sends it to the all mobile applications. So in this solution you have a mobile application. In that mobile application you will see कि आपके जितने भी sections में stations है आप configure कर सकते हैं कौन से user को कौन से maintainers को कौन सा section देना है. So उस section से related whatever health or problems are there in the network, that is being notified to the mobile. So that's why this event notification gateway comes into picture. And then you have a FXO gateway. That's FXO and FXS. These are the two kind of analog to IP gateway, which one is foreign exchange operator, where ये directly आप railway exchange से interface करने के लिए for interfacing with the existing railway station exchange, this FXO gateway is connected so that whatever railway phones are there, that phone can directly talk to the controller as well as the way station. There is a provision whether you want to do it or not, that's different, but there is a provision to call. And then you have a DTMF gateway. DTMF gateway is nothing but let's say today you have a controller who is let's say having 20 stations को वो control कर रहा है, but कुछ station में let's say आपका VOIP system लगा नहीं है, they have a analog omnibus system. To make it interoperable, and those analog phones also come on the same controller screen and in the same controller call. So that's why this DTMF gateway is used, which converts the analog to analog omnibus circuit to IP based communication. Likewise, you have an emergency gateway. This emergency gateway is used for the emergency communication, and again 2-wire 4-wire communication to IP based communication, and this can be used in the station also, so that आपका control communication and emergency communication के लिए आपका PDMux की जरूरत नहीं है. So RDSO का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम PDMux को वॉइस कम्युनिकेशन के लिए कैसे बाईपास कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस गेटवे आप इमरजेंसी कम्युनिकेशन PDMux से हटा के डायरेक्टली आप इस गेटवे के थ्रू IP पे लेके आ सकते हैं. सो वंस यू ब्रिंग दिस इन ऑन IP,
then emergency call can be directly landed to the controller as well as anywhere in any station. So controller is not picking up the phone or not responding, then similarly that can be given to the stations as well. So since it is a digital system, so you can configure the call, there is a dial plan and call plan, so which can be configured, और उससे आप पूरा entire आपका mechanism को set कर सकते हैं. And this इसके लिए क्या है, main server block जो communication heart of the system है, इसके redundancy, for the redundancy of this we have a disaster recovery server. So this disaster recovery server is nothing but the redundancy of the main server. In case main server is down, this server can pick up and then the inter communication will happen. And at the wayside you have again in the OFC room we have the gateway if you are going for communication gateway, and at the station side we have IP VOIP phone or VOIP control equipment. So VOIP control equipment जो है, it is not limited कि आपको एक ही लगाना. You can have n number of VOIP control equipment in one station, whether for any of the controls. So this is a major functionality of VOIP. RDSO ने जो specification दिया है सर, उसमें जो networking वाला part है, वो scope से बाहर रखा है. इन्होंने ये बोला है कि जो purchaser है, रेलवे है, उनका networking mechanism अलग हो सकता है. For example, somewhere they may have IP/MPLS network, somewhere they may have this STM जिसमें Ethernet card है, किसी में नहीं है. So likewise, based on the railway, IP network railway IP backbone provide करेगा, and उस IP backbone के ऊपर ये VOIP system implement होगा. So उसका ये overall architecture है. Now मैं अभी detail wise क्या-क्या solution components है, the architecture में mentioned है, but still हमने we have tried to put it here and then one item wise we can explain. The solution components are on the headquarter side. We have communication server block, 1+1 DCDR combination. We have voice recording server. We have NMS server. Then FXO FXS gateway for interfacing railway exchange. Section controller console, emergency controller console, test room console. Then event notification gateway. The network switch and all these things are basically ये रेलवे का आईपी बैकबोन का पार्ट है. एंड देन डीटीएमएफ गेटवे, अगर कहीं पे आपको डीटीएमएफ गेटवे की जरूरत है फॉर ट्रांजिशन, एंड इफ सम ऑफ द लेट्स से आईपी फोन इज नॉट अवेलेबल और एनी रिटेंडेंसी पॉसिबिलिटी एट द स्टेशन लेवल, देन यू कैन कीप दिस डीटीएमएफ गेटवे फॉर टाइम बिंग. एट द वे साइड अगेन वी नीड अ लैन स्विच, राइट. स्विच इसीलिए चाहिए क्योंकि आप इन वे साइड में यू मे हैव, आपको शायद हो सकता है you want to connect multiple IP phones, you want to connect FXS gateway for example. So FXS gateway जब हम स्टेशन में लगाते हैं तो उसमें हम डायरेक्टली एक एनालॉग आपका जो एग्जिस्टिंग फोन है वो FXS गेटवे में आप लगा सकते हैं, एंड फ्रॉम दैट फोन आप VoIP नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. एंड देन इमरजेंसी कम्युनिकेशन गेटवे. दीज आर द सॉल्यूशन कंपोनेंट्स फॉर VoIP बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम. इसमें जो एक मेजर ओवरऑल अगर हम इस पूरे सोल्यूशन को देखते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंट्रोलर को कितना कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज कंट्रोलर आज के डेट में टुडे बिकॉज ऑफ दिस एनालॉग सिस्टम, because of the noise, because of various things happening, so they always are not able to concentrate on their planning and their actual work. So this communication system is very important. I mean, this communication control equipment is very important. So that's why जो specification कहते हैं, it has a inbuilt touch screen based solution, और इसमें आपके साथ टच स्क्रीन बेस्ड सोल्यूशन के साथ इनबिल्ट दो रिडंडेंट स्पीकर्स है, गूसनेक माइक है, हैंडसेट है. आप अगर इस को देखते हैं नीचे वाले इस प्रोडक्ट को, ये कंट्रोल इक्विपमेंट में ये बिल्कुल एम्बेडेड सिस्टम है. सो ऐसा नहीं कि बाहर कहीं स्पीकर है, एक स्पीकर खराब हो गया तो क्या होगा.
So these is a very ruggedized controller which has a touch screen panel. सिंगल टच से आपको स्टेशन पे आप कॉल कर सकते हैं. तो ये जो स्क्रीन पे स्टेशन का नाम दिख रहा है, सो आप किसी भी स्टेशन पे कंट्रोलर प्रेस करके कॉल कर सकते हैं. अभी उनको नंबर डायल करना पड़ता है, बट वो टच स्क्रीन होने के कारण वो हटा दिया गया. दूसरा, इसके साथ हार्ड कीज भी अवेलेबल है. इसके साथ अब हार्ड कीज भी अवेलेबल है जिससे आप कोई भी स्टेशन को डायल कर सकते हैं. फिजिकल पीटीटी का ऑप्शन है पुश टू टॉक के लिए. देन आपका कॉन्फ्रेंस सेटअप होता है, आप अलग अलग कॉन्फ्रेंस सेटअप कर सकते हैं इसमें. देन आपका जो स्टेटस है स्टेशन का कि बिजी है कोई स्टेशन मास्टर, या किसी का फोन रीचेबल नहीं है, या उस फोन में कुछ प्रॉब्लम है, ये सारे स्टेटस जो है ये कंट्रोलर को भी दिखता है एंड एनएमएस को भी पता चलता है. ऑल्सो इसमें कॉलर आईडी, कॉल रिकॉर्ड, मल्टीपल ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं. आप इसमें से मैसेज भेज सकते हैं, सेंड और रिसीव मैसेजेस भेज सकते हैं. एंड देन सिंस इट इज अ कस्टमाइज्ड टच स्क्रीन बेस्ड सिस्टम, तो ये टेस्ट रूम कंसोल और जो आपका टेस्ट रूम कंसोल एंड कंट्रोलर कंसोल बोथ आर मोर ऑफ अ सेम कैटेगरी. बट टेस्ट रूम में क्या होता है, ये एक इक्विपमेंट टेस्ट रूम में भी होता है. So today on the test room you have lot of connections, and then your panel link, all these are replaced with this single equipment at the test room. And the test room console can basically monitor all the sections and all the section controllers. So in the engineers at the test room can see the entire network with the similar functionality. If there are any issue with the station voice, he can check from here, he can connect, he can talk. So all these functionalities are available in the test room console. At the wayside, if I talk about wayside VoIP phone, again this single, you can keep a single phone for entire control, or also you for the traffic, I mean this train operation, you may have one phone, and for other controls, including other controls, you may have single phone having 4 or 5 control options. And just like this, for whenever a call comes from controller, तो यहाँ पे इनका एक अलग डिफरेंट टोन आता है, रिंग टोन जो होता है फॉर द सेक्शन स्टेशन मास्टर के लिए अलग होता है. एंड आप अलग अलग कंट्रोल के लिए अलग अलग रिंग टोन सेट कर सकते हैं. सो कंट्रोलर आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस टाइप का कॉल है. इसमें फोन उठाते ही आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं. यू जस्ट वंस पिक अप द फोन, द स्टेशन मास्टर डायरेक्टली कनेक्ट्स टू द कंट्रोलर. वी हैव टू कीप द सेम omnibus procedure and in this VoIP, so that's why that is being also configured and implemented. Like since it is a बहुत सारे ऑफ द शेल्फ अवेलेबल इक्विपमेंट्स है VoIP फोन के, so you can connect those phone directly, and then it is a plug and play device for you. You have a call records, missed call, all these details are available on this wayside equipment. This is one of the layout of our actual implementation. In the headquarter, you have this rack, 19-inch rack. In that you have switch and then communication server, voice recording servers. तो ये सारे servers के लिए you have one rack, and then you have a in the test room you have DTMF gateway, you have emergency gateway, you have test room console, and also a client PC for NMS as well as voice recordings को देखने के लिए test room में. Likewise controllers है, for example 3 different controllers है. This is an example of Allahabad in Kanpur, Allahabad and Prayagraj control, where we have implemented 36 stations in NCR. So there they have 3 controllers, and different controllers are having their own sections. So likewise 3 different section controllers है. And in the wayside हमने यहाँ पे जो IP network use किया है, IP network we have used from railway is they have a STM4 and STM16 and Ethernet card is inbuilt.
So from that we have got a Ethernet connection and हमने इस पे एक स्विच लगाया है and स्विच के थ्रू ये कनेक्शन जो है हम लेके गए हैं स्टेशन पे एंड इन स्टेशन पे आपका फोन लगाया है एंड मल्टीपल आपका कम्युनिकेशन किया है। जहां तक OFC हार्ट में हमने स्विच लगाया है, सो रेलवे ने हमें 48 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई दिया था, उसके बेसिस पे ये हमने स्विच लगाया है। और बे साइड में हम 12 वोल्ट का बेसिकली कन्वर्टर यूज करते हैं। 12 वोल्ट से ये फोन 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में ये चलता है। ऑल्सो इसमें बड़ा फीचर ये है कि पावर ओवर इथरनेट, तो जितने भी आपके बेस स्टेशन इक्विपमेंट्स है वो उसमें आप अगर आपने OFC रूम में PoE स्विच लगाते हैं, सो आपका स्टेशन में पावर की जरूरत नहीं है, आपका फोन जो है स्टेशन में पावर ओवर इथरनेट से चलेगा, प्रोवाइडेड आपका स्टेशन और इसके बीच में डिस्टेंस कैट 6 केबल से रीचेबल हो। ये जैसे हमारा जो 1+1 कम्युनिकेशन सर्वर्स है, this is a basically industrial grade server and very importantly the software is the main key within this server. So we have a Linux based operating system in it, and then the control software, switching and everything is done in this with the help of the software. Then NMS का भी ये है, NMS में in NMS we have multiple options to see real-time data and then see the history of the data. Then इसमें थोड़ा geographically आपका जो टोपोलॉजी है नेटवर्क का, उस टोपोलॉजी के बेसिस पे NMS मॉनिटर कर सकता है और ये सिक्योर्ड है एंड आपको बेसिकली एक्सेस करने के लिए आप अपने नेटवर्क में फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस, but you need to have a username password to access the system. This is very very important for the maintenance team to do a effective maintenance of the system. Generally VoIP based system you need very less maintenance because once your IP network is up, it is most of the time is absolutely fine working. And then likewise the voice recorder server, again it has a functionality interface, user interface for retrieving all these records. So we have a 3 months recording in this system for like in Allahabad we have installed. So therefore 36 station you have 3 months of recording. Generally recording का जो capacity है ये define होता है कि आप जब communication कर रहे हैं, when you are doing a VoIP communication, like I said, there are two. One is SIP signaling for signaling, and second is for RTP के लिए आपका real time protocol है. So RTP voice के लिए हमें जो communication use करते हैं, so उसमें when we do a signaling interface, तो इसमें codec हम select करते हैं. So for example, you have PCM codec like ALAW, MULAW, 64 kbps का codec है. Then you have ADPCM codec. You have 8 kbps का G723 codec है, G711 है. So likewise, there are many codecs which can be selected for the communication. So if you are basically selecting a high-end codec, for example, आप 64 kbps कॉल के लिए PCM codec यूज करते हैं, तो आपको स्पेस रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा चाहिए. बट सेम सिंस 8 kbps वाला कोडेक भी आपको मोस्टली वही क्लैरिटी देता है, सो हम आप उससे आपको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. सो यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, आई मीन द यूजर हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी टू डू द कॉन्फ़िगरेशन एज वेल. Then you can okay, so archival, backup, and sending on email, retrieving on email, all these functionalities are available in the voice recording server. Now coming to the DTMF gateway. DTMF gateway is like I have explained in the architecture. Why we have used this DTMF gateway is to facilitate the legacy system interface with the VoIP. For example, आपका legacy system भी चलता रहे और कुछ टाइम के बाद when there is an perfectly सब ट्रेन होके VoIP सिस्टम में आ जाते हैं, then they basically they can remove or keep it as a redundant system.
but it is important कि controller should have only one screen or on equipment, not for DTMF separate and VoIP separate. So to have that functionality, we had to give this DTMF gateway. So DTMF gateway में हम 4-wire TXRS लेके आते हैं, and then this gateway basically converts it and stream कर देता है IP पे, and vice versa. So that way the software at the controller takes care of it, and basically it provides a channel for overall communication. Likewise, emergency gateway. इमरजेंसी गेटवे का जैसे हमने एक बार एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम पीडीमक्स को हम बाईपास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमरजेंसी गेटवे, एंड ऑल्सो हमें इमरजेंसी कंट्रोलर को भी वीओआईपी पे लेके आना है. सारे कम्युनिकेशन को वीओआईपी, वी हैव टू ब्रिंग आउट इट ऑन वीओआईपी. दैट्स व्हाई दिस इमरजेंसी गेटवे कैन बी यूज्ड एंड वी कैन ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द वीओआईपी नेटवर्क. Some of the highlighted features, if you see from the system, is for station master there is a single equipment, distinctive ringtone for ring from controller. There are shortcuts button for dialing various controllers. वो अपने controller के साथ साथ other controllers also can dial, but provided you configure in such a way कि he is allowed to dial or not. Incoming call alerts from section controller even when the phone is busy or off hook. अगर फोन वो उठाया भी नहीं होगा, आई मीन इज उठा के ऑफ हुक रखा है या किसी से बात हो रही है, तब भी अगर कंट्रोलर से फोन आएगा तब भी उनको अलर्ट्स मिलेंगे. कॉलर आईडी, कॉल रिकॉर्ड, मिस कॉल, ऑल दिस एडिशनल फंक्शनलिटीज यू विल बी एबल टू सी ऑन ASM स्क्रीन. स्टेशन टू स्टेशन कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. टुडे आई मीन इन सम ऑफ द रेलवेज they have asked ki the station master should be able to talk to the previous station and the next station, so that adjacent stations. So with the help with this VoIP technology, there is a provision to call station adjacent stations from the station master's phone. Also video call is also possible. Video communication is also possible by adding a small hardware at the controller at the switch side, and as well as switch in the sense communication server side, as well as on the phone. And there are a lot of phones available, so video call is also possible. But in this RDSO specs, they have not asked for video call today, but they said it is possible with the additional hardware. For controller, again, it's a GUI, graphical user interface for controller. Touchscreen selective calling, controller to controller call is also possible. Information of the stations are available on the screen. Then messages is possible. Ambience listening, video call possible. For maintenance and management के users के लिए क्या benefit है? Like emails, SMS alerts. आज के डेट में मेजर प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आता है जब तक वो नॉइज नहीं आता किसी भी सेक्शन में, so we don't know ki what is the problem. That is already there. Power over Ethernet, headquarter to have inbuilt protection. Protection is possible. Redundant network can be possible. Uniform time distribution, NTP over the network. Highly secure and easy to maintenance. These are the major functionalities of and benefits for the maintenance and management team. Some of the more benefits are here, like if I go in. So I have spoke about most of the things here, but one or two things I want to add in this is you have, let's say, LTE or GSM or 4G network coming in due course of time. Like railway ko abhi they have got the spectrum also for LTE. So control communication, jab IP VoIP pe aa gaya is on the VoIP. So with the, if let's say the backbone network sometimes is not available, but we can put a small interface at the station side, and then the station master can directly talk over the LTE to the controller. So that is a major functionality. So you have a communication like wired to chali raha hai aapka, but you also have a provision to have a wireless through 4G LTE network to the controller. And the voice clarity is absolutely fantastic in digital system. So because there are a lot of echo cancellation, noise cancellation are inbuilt in the digital system,
and there is a automatic gain control. So abhi today the controller, some station voice is low and some station is high, so they always at the controller level उनको manage करना पड़ता है. But since AGC is inbuilt in the digital system, तो ये automatic gain control करता है and the volume, low volume को ऊपर लेके आता है and high volume को नीचे लेके same level पे controller के लिए it brings. So that is the major advantage. And from a testing perspective, so if how do you test the entire network and what are the overall feedback and benefit and summary of the system? इसमें QAS, quality of service, is the very important parameter. See how your voice communication is happening, not only because of the equipment but also the backbone network कितना strong है. So QAS हम calculate करते हैं. So there are tools available which networks tools analyze करके QAS हम calculate कर सकते हैं. Standard protocol है, so that the till today when you are going to VOIP, you may have to use some legacy systems integration. Like हमने इसमें 2-3 integration किए हैं, railway exchange, DTMF gateway, emergency gateway. But now onwards, when you have a VOIP system, any future technology is coming, for that they have a standard protocol for the next generation technologies. Common IP backbone can be used for voice, data and other applications as well. Like I mentioned about the graphical user interface, unified communication approach, then central monitoring, very highly available. It works on the backbone network as long as IP is provided or wireless network. Message का support है. हो सकता है in future if you use this system like you have a LC gate communication also, so messaging and communication can be integrated and can be done through this technology. Migration is possible. ASM phones, like I said, that's COTS commercially off the shelf बहुत सारे available है. Highly acceptable by station master. Efficient maintenance, monitoring, retrieving, auto switching. It will help in removing PDMux problems. Multiple interfaces is also available. So these are the feedback. These are the two basically works which we have executed so far. One, like I said, in Banaras division, RDSO specification, and second is this Allahabad division for 37 stations. So these are the work we have done so far. So thank you, sir. We can, I would like to, it would be good to have an interactive session. So whatever questions you have, we can start discussing. ओके थैंक यू रतन जी. मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी अपने क्वेश्चंस क्वेरी पूछना चाहते हैं तो वो पूछना चालू करें. Good morning, Mr. Saha. This is CSE Southwest Railway, JB Pawar here. Good morning, sir. Yeah. This regarding the network connectivity, you have said that it is backward compatible, forward compatible. You have said that with the legacy hardware also and with the futuristic also. So just now on the last slide I was saying, then you are saying because it is a VoIP communication, do you have any interface which will be tomorrow possible to be connected to LTE, maybe GSM-R if it is not given there? Absolutely, sir. Now there is no specification by RDSO. No company is there in RDSO. Of course, it is under the aegis of RDSO that this IRCAMTECH is doing this presentation from your side. So just tell us what are these endpoints they have specified? Like you have to have both generations, earlier generation and the coming generation ready. What you have taken care of? Okay. So thank you, sir, for this important question. In fact, basically you are right. So the endpoints suggested by RDSO are there are two basically. One is VoIP phone, and other is the existing analog phone. But whereas the futuristic integration is concerned, you are right.
There, RDSO have not suggested about the LTE based communication, but we in this presentation I was explaining that this is possible and RDSO can add in future provided the railway is basically have a requirement. So I think from a LTE perspective, it is absolutely possible with the help of IP2, basically this LTE gateway, small gateway modem will come into picture, and then it can be integrated with the help with VOIP system. Okay, now second question, if anybody doesn't object, the second question is that you see you are having assorted range of products. Now tomorrow I have to go in for AMC. What happens is that then I have to go only to the firm which has given. So now is it possible, like we have to get some things in ARC, we can maintain our stuff. So is it possible for us to go in for an ARC upfront? I am asking you because there is some software component of it. We are having one another competitor, Creative Communications. They were not very much clear because there was no specific guidelines, maybe from whoever has done it, that it should not be very proprietary. So now one has to go for the system that whatever server you are having, you have not specified whether it is avionics or whichever server you are using in it. So whether it will be very proprietary, and then we can maintain it ourselves. Sir, this is not a proprietary server. It would be a standard server available in the market, and the SIP signaling, like we spoke about the VoIP and SIP signaling. So those are the standard signaling. If you want to use any open source also, that standard open source also can be put in the main server, sir. So we don't have to come back to you only after 1 year if we know our stuff, little bit of programming. Absolutely. We add some more control boards ourselves if it is possible. Then the next thing is there, because you have said that it is possible to integrate. Now some networks are IP MPLS. We already have one. So tomorrow I want to connect my Mysore with Hubli and Bangalore. It is possible to connect, right? That DR you have shown one. Yes. Do you have shown DR? Just can you explain that? What you are specifying in that? So, sir, disaster recovery server is the similar server replicated to a different location in the same network. So, for example, like you said, you can put one in Mysore and one in Hubli, let's say. Yeah. And we have to create a basically VLAN for that, right? So that we can communicate amongst those two locations. Okay. That is not your. You are only selling a standalone system which is future ready, right? Right, sir. That's basically IP reachability has to be there, and 1+1 redundancy will always be provided on the same network. Yeah. Okay. The next thing is a very important one for all of us. Now, see, we have to buy sometimes something, except for your hardware. Other things we can buy. You see all those equipments you have shown us, except for the heart. We can buy all of them. So will it go? You have any idea? It will go to GEM? It is looking like an intensive, material intensive. Sir, it can go to the GEM definitely, and provide. Only thing is that these two gateways which I spoke about, emergency gateway and DTMF gateway, these two gateways are specific to the railway environment, sir. So there are these are not off the shelf available items. So that's why these two, though I mean the people who are developing this to the gateway, they also put it in the GEM, not an issue, sir. Okay, so you'll be available through GEM. We can do that, provided if railway is asking that way,
be very happy to do that. Not an Okay, thank you and sorry for taking everybody's time. Thank you. Thank you, sir, for your valuable questions. And really, I mean, this is a good idea to put it on GEM for us also. We being a OEM, it becomes easier actually if it is on GEM, and then railway can buy it from there. Good morning, sir. Good morning, sir. You can't hear you, sir. Hello. 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 Sir, we can't hear you. Can I ask you some question? Yeah, sure. Ratan sir. हेलो Please, sir. Please go ahead, sir. सर अगर डिजास्टर के टाइम पे हमें ये फोन देना है आईपी तो सर कैसे देंगे ये डिजास्टर वाली जगह पर जैसे कहीं नहीं, डिजास्टर हो डिजास्टर जाता वाली है जगह पर आप सर डिजास्टर लोकेशन पे आप सिर्फ वो देंगे ना, सर्वर होगा डिजास्टर लोकेशन पे। बट आप अगर स्टेशन में बात कर रहे हैं, आप स्टेशन पे सिर्फ फोन रहेगा। ओके, तो उसमें भी कोई आईपी डालनी पड़ेगी? नहीं, उसमें सर ऑलरेडी डिजास्टर लोकेशन और मेन लोकेशन का आईपी फीड इन होता है सर उसमें। सो प्राइमरी जब अनरीचेबल हो जाता है वो अपने आप सेकेंडरी लोकेशन को कनेक्ट करता है। तो हर स्टेशन पर अलग अलग एक आईपी होती है? नहीं, स्टेशन का तो आईपी अलग होगा, लेकिन उस फोन में दो सर्वर लोकेशन का, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर लोकेशन का आईपी डालते हैं हम बस। हर स्टेशन का आईपी डिफरेंट होगा, लेकिन उस फोन में दो सर्वर के लोकेशन का, डिजास्टर और मेन, मतलब मेन और स्टैंड बाई का हमें आईपी एड्रेसेस डालना होता है। ओके, मेन सर्वर क्या ये एनएमएस पे रहता है या कहीं और लगाते हैं आप? मेन सर्वर आपका जो हेडक्वार्टर में जहाँ पे आप मेन कम्युनिकेशन सर्वर लगा रहे हैं, जैसे हमने अगर आर्किटेक्चर को देखते हैं दोबारा, इसमें अगर आप देखते हैं, सो मेन सर्वर आपका लेट्स से हेडक्वार्टर में जहाँ पे आपका हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसमें टेस्ट रूम या डेटा लॉगर रूम या जो भी अवेलेबल होता है अपर डिवीजन पे, वहाँ पे लगता है। ओके सर, थैंक यू। My voice is audible. Yes, sir. I was asking, sir, how is it different from an IP phone? I mean, with an IP exchange. I mean, if you ask about the technology, it's not much difference. Only thing is, जो railway specific, when you had to make it railway specific, so that way some functionalities and flexibilities are given. आप अगर VOIP exchange and communication server can be more or less, these are the same product, but we have to see that what are the additional functionalities are being required to meet the control communication. Okay, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सर, मैं ये चाहता था कि जैसे मिड सेक्शन है दो स्टेशन के बीच में, कभी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट साइड में हमें कंट्रोल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो उस जगह पे इसमें कोई प्रोविजन है कि हम मिड सेक्शन में बिटवीन टू स्टेशन कहीं एक्सीडेंट साइड है वहां पे हम कंट्रोल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो क्या प्रोविजन है इसमें? सर उसके लिए ऑफ कोर्स आपको वायरलेस ही कम्युनिकेशन आप करेंगे एस्टेब्लिश, राइट? सो एक तो वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रोविजन है कि आपने वहां पे, मतलब टुडे स्पेसिफिकेशन RDSO के स्पेसिफिकेशन में
वो प्रोविजन नहीं है, लेकिन सिंस हमने ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी चूज किया है, सो वी कैन थिंक डिफरेंटली एंड ऐड मोर फंक्शनैलिटी। तो आपको एक्सीडेंट साइड कम्युनिकेशन, सपोज दैट किसी स्टेशन से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोई एक्सीडेंट साइट है, वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, तो फिर डिवाइस वगैरह इसमें लगाना पड़ेगा, उसको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वो उसका सिग्नलिंग हाँ लाइन दो ऑफ चीजें हैं साइट सर। कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा, ये वायरलेस है। उसमें सर एक चीज है, अगर आपके पास वहां पे बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको 4G की अवेलेबिलिटी होती है तो आप यूज कर सकते हैं, देन तो क्विकली आप आ सकते हैं नेटवर्क में। और अगर आप ये था कि हमें इमरजेंसी कंडीशन में प्राइवेट नेटवर्क है वहाँ पे, उसको इससे जोड़ने का कुछ प्रोविजन हो सकता है। और हाँ सेकेंड बिल्कुल थिंग, एक्सटेंड साइड से वीडियो वगैरह हमें ब्रॉडकास्ट वीडियो स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है कि वहाँ एक्सटेंड साइड पे क्या चल रहा है, ये सब। तो इसमें वो कर सकते हैं क्या, उसको कोई प्राइवेट नेटवर्क से उसको जोड़ने का काम हो सके, तो वहां से स्टेशन तक प्राइवेट नेटवर्क से आ जाए, ताकि जैसे मोबाइल नेटवर्क है लाइक दैट, और उसके बाद वो रेडनेट कनेक्टिविटी के थ्रू हेडक्वार्टर और डिविजनल हेडक्वार्टर। बिल्कुल सर, इट इज पॉसिबल, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, जिसमें बट आई थिंक यू नीड टू हैव एडिशनल डिवाइस जिसको आपको वहां लेके जाना पड़ेगा स्टेशन साइड में। मोबाइल नेटवर्क वॉइस एंड वीडियो दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको वहां पे नेटवर्क में बैंडविड्थ कितनी मिल रही है। जब 4G मिल रहा है तो वीडियो के लिए स्पेशली, कॉल्स का तो कोई इशू नहीं है। सर कैन आई से? यस प्लीज। सर क्या ये वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। ओके। आपको एक्सेस पॉइंट बनाना है एंड देन आपको अल्टीमेटली वो नेटवर्किंग का काम है। इसमें बहुत सिंपल है, दिस VoIP टेक्नोलॉजी को हम अगर समझना चाहे तो बहुत सिंपल है कि हमें बैकबोन का सिर्फ IP नेटवर्क चाहिए, चाहे वो वाईफाई एक्सेस पॉइंट के थ्रू हो, OFC के थ्रू हो, STM के थ्रू हो, कोई भी IP MPLS हो, कैसे भी हो, हमें वो एक IP का एक नेटवर्क चाहिए जो हम IP रीचेबिलिटी हो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम लेके आ सकते हैं सेंट्रल लोकेशन पे। हेलो रतन सर। यस सर। इसमें कुछ क्लाइंट एप्लीकेशन का भी कुछ प्रोविज़न है क्या, कि अगर हम मतलब आईपी टेलीफोन अगर ख़राब हो जाता है तो मोबाइल में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हम मतलब उसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? मोबाइल ऐप मतलब जैसे स्टेशन की बात कर रहे हो? हाँ, स्टेशन पे जो आईपी टेलीफोन लगा हुआ है, अगर मान लो उसमें कुछ ख़राब हो जाता है, वो मतलब फॉल्टी हो जाता है, तो मतलब क्या हम मोबाइल में कुछ ऐसी इस प्रकार की एप्लीकेशन है आपके जिससे सर मतलब जो देखिए है ये, कम्युनिकेट कर पाए? यस, सिप फोन का तो जैसे IP फोन के लिए तो मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल होता है, डेफिनेटली होता है, बट उसको जो है आपको 4G नेटवर्क के थ्रू आप यूज करेंगे ना, उस केस में हाँ हाँ मोबाइल नेटवर्क के थ्रू यूज हाँ करेंगे, राइट? हाँ हाँ। सो वो आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन सर्वर होगा उस केस में सिर्फ हम मेन सर्वर के यहाँ पे उसको हमें एक स्टैटिक IP देना पड़ता है, या तो हम उसको एक 4G गेटवे लगाना होता है, दो में से एक चीज करना पड़ता है मेन सर्वर। अच्छा अच्छा। दूसरा ये आपने जो अभी दो डिवीजन में इंस्टॉल किया है ये सिस्टम, तो आपने सभी कंट्रोल को वहाँ पे चलाया है कि केवल जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है केवल उसी सर्किट को आपने इस टेलीफोन पे लिया है? सर अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें उन्होंने सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल को ही बोला गया था, बट ये इसमें कोई यू कैन आप इजीली बाकी कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो IP का एक सब्सक्राइबर बन जाता है, दैट्स इट। अच्छा अच्छा। और तो उसका मतलब जो डायल प्लान है वो डायल प्लान आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेंट्रल लोकेशन पे। ओके ओके, मतलब मैक्सिमम हम कितने जो है कंट्रोलर उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्चुअली में ये अगर टेक्निकली तो अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन सर्वर आपका है, हम्म। मेन सर्वर का कैपेसिटी के हिसाब से हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को ऐड करते हैं।
जैसे RDSO ने शायद 99 सब्सक्राइबर्स का एक हार्डवेयर में बोला गया था, बट आप इसमें 200-300 सब्सक्राइबर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ओके। तो मतलब अभी इलाहाबाद और जो है वाराणसी डिवीजन में केवल आप ट्रैफिक कंट्रोल मतलब इस पे चल रहा है इस सिस्टम पर? जी सर। अच्छा, ठीक। और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो दे कैन आस्क। Yeah, again, CSE Southwest Railway here. Mr. Saha, you were telling that because you have included most of the features through software. Now the question is, if we are having two boards and three boards in the beginning, like this Varanasi, wherever you are having, further they want to have extension. Now over the same server, and maybe adjoining, if they want to do their own programming, what is the restriction you will be having for these people? Now it is only this endpoints which has to be added. You are seeing all those endpoints are similar. There is not much different except the heart which you have designed. So what is going to be your restriction? One can add all the boards tomorrow. If it is, you are given permission 99 something. Now so many stations can be there or more in a division, say 200 stations. Then it is permitted for anybody to do his own thing. Sir, I think see, basically for adding base stations should not be an issue, but when you want to add controller equipment or controller software, so that will be limited. For example, you have taken 4 controller initially. If in the same controller, if you want to add multiple stations, then it is possible, because in one controller we have given around 99 stations. Okay, so that is going to be your license. You will be issuing some license. License for the controllers, right? Yeah. Now talking about Varanasi, we are having some company which is already experimented and supplied in Varanasi itself. Creative. So will it be possible to interface with their equipment over IP MPLS for fallback server? Their DR site is given, right? So whether that way you are interchangeable one over other, just for the taking care of the server side. Is it possible? Yeah, I think in server, if they have used a open tender, then it is possible, sir. Okay, so what open source software you have used? Linux based you have used? We have used, sir, Asterisk. We have used. You have used Asterisk. Okay. Yes, We have two solutions we have. One is Asterisk and other is basically more close and limited and high performance and limited functions. I think it's better always to push open source, because in future, like you said, your engineers can be trained and they can maintain the system. Okay. Now another one important thing. Generally now we have advised to have a EPS contract. So you are one of the contenders, one of the work. Besides that, there will be some supply of routers, switches, and other things. So are you having some EPC contract type of tie-ups, some with some system integrator, and then you can supply in our project? We are having a project in which we are asking for this. So you must be aware. We can share the information further. But then you cannot directly quote. Your system integrator would be quoting this plus router switches. Plus, you are a predictive maintenance company also, I know. Yes. So, yeah. So if you could be supplying along with that some predictive at the stations, all over your own backbone. What backbone you are creating? No, it can be that omnibus for the RailNet network. The IP MPLS network which we are having. Then we are also having the SDH.
which has to coexist, and of course your system is compatible for that too. Yes. Yeah. So are you having some? So you will have to come first through some solution partner, the system integrator. Yes, sir. We have a few EPCs. I mean, we work like that only for small, for the project where we feel it is very important for us to participate and pick up. Otherwise, we go through EPC only, sir. We have 3-4 companies whom we work, sir. Anyway, you could share us the specifications, your draft specification, whatever you have given to RDSO. Like they have crystallized for the predictive maintenance. I suppose now for you people also, have they crystallized for this VOIP based TCCS? RDSO is there, RDSO? Yes, RDSO specification is there, sir. Who is there from RDSO now? Anybody there in RDSO now here in the conference? I don't think there is the specification which is given for the predictive also, correct? Sir, FRS, they have came up with the FRS recently. Okay, then you could share the FRS and the SRS also. SRS for the IoT devices and Yes. the communications which you are doing. Yes. You must be remembering I visited your firm in Delhi, Okhla. Okay. Yes, so you can share some of that in the email or whatever here with us, all of us. Sure, sir. I will share you the FRS not an issue, and then after this email call also we can send you an email as well. Okay. Okay. Thank you. Thank you, sir. रतन सर, सर एक बार इसके सिक्योरिटी फीचर को एक बार और आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें इस सिस्टम में जो सिक्योरिटी फीचर हैं जो दिए जाएंगे, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए एक बार। ओके सर, सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईपी में जब भी आप कोई एक्सेस करते हैं सिस्टम को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पूरे नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो आईपी लेवल पे एक सिक्योरिटी होता है, एंड देन सेकेंड जो हमारा सर्वर्स है, ये सर्वर में हम सिक्योर बनाते हैं। इसमें जैसे कोई बाहर से कोई डीओएस अटैक ना हो, कोई इस पे हमारे नेटवर्क में सर्वर में एंट्री कर सके, फायरवॉल सिक्योरिटी, वो सारे आईपी नेटवर्क की सिक्योरिटीज को हम इसमें इनबिल्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक सिस्टम एक्सेस का प्रॉब्लम, so accessing the system always there is a provision to have a authentication, मतलब यूजर का नेम पासवर्ड बेस में एक्सेस पॉसिबल कर सकते हैं आप स्टेशन लेवल पे एज वेल एज कंट्रोलर लेवल पे, सो दैट कि कोई भी इस सिस्टम के अंदर आप कोई भी नॉर्मल फोन लगा के एंट्री करके उसमें आपको कम्युनिकेशन में एंटर नहीं कर पाए। एंड ये सारे जो डायल प्लान्स एंड जो सिक्योरिटी आई मीन कम्युनिकेशन का जो प्रिविलेजेस है, ये सारे प्रिविलेजेस मेन सर्वर में हम करते हैं। सो जो आपका मेन कंट्रोल एडमिन होगा, सो उनके ही ओनली विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर कि उनका जो प्रिविलेजेस है, ऑथेंटिकेशन है, सो दैट बाहर से कोई उसमें एंटर करके कम्युनिकेशन में ना लिसन कर सकते हैं, ना उसमें सुन सकते हैं, आई मीन कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड और जो आपका सिक्योरिटी ओवर द नेटवर्क में एप्लीकेशन लेयर होता है, तो जैसे सिप एंड आरटीपी है, तो आरटीपी इज द ऑडियो वॉइस रियल टाइम प्रोटोकॉल में जो होता है, उसमें एक एसआरटीपी का कॉन्सेप्ट रहता है, सिक्योर्ड आरटीपी। सो आप वो सिक्योर्ड आरटीपी भी इसमें प्रोविजन है करने के लिए। सो बेसिकली 3 लेवल पे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। एक तो नेटवर्क लेवल पे हो गया, जो फायरवॉल और आपके डीओएस अटैक, ये सारी चीज को क्लोज करने के लिए आरडीएसओ ने भी थोड़ा स्पेसिफाई किया है इसके बारे में। एंड सेकेंडली स्टेशन लेवल पे आप कर सकते हैं कि कोई भी फोन लगाया और उस नेटवर्क में ऑटोमेटिक आए विदाउट एनी परमिशन, सो दैट वो
एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन हो सकता है, और तीसरा प्रिविलेजेस कॉन्फ़िगर हो सकता है, एंड जो आपका ऑडियो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आप SRTP पे कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 or 4 टाइप ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म हैव बीन टेकन केयर ऑफ। ओके ओके। अगर कोई और भी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं अभी। ये हमारे पास जनरली VHF होते हैं, उसमें आजकल डिजिटल आ रहा है, कैनवुड में कुछ है अवेलेबल, मेरे ख्याल से मोटोरोला भी बना रहा है ROIP बेस्ड। तो ROIP जैसा हमारा तो कॉपर पेयर आया हुआ है, उसमें मॉडेम थ्रू वो कनेक्टिविटी आ ही रही है फॉर द साइट। अभी वी वांट टू हैव दिस डिजिटल कम्युनिकेशन आल्सो। तो वहां से इंटरफेस आपका ROIP में आप एक गेटवे बना सकते हैं, मतलब ROIP जो अपना ये VHF वाला यस एट द स्टेशन या wherever, अगर आप एक्सेस पॉइंट बनाना चाह रहे हैं एट द एक्सीडेंट साइट, तो वैसे आपने UCCS बोला है, तो उसमें क्या है, हम लोग के पास ऑलरेडी सिस्को के IP COCM 11.25 अभी 12.5 ऐसे भी चल रहा है। तो उसमें हमारे एक्सचेंजेस है, और हमारे एक्सचेंजेस सारे VOIP बेस्ड होने वाले हैं अभी साउथ वेस्ट रेलवे में, ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू कोएग्जिस्ट। तो उसमें जो कंट्रोलर को एक्सचेंज फोन थ्रू भी कनेक्ट करवा सकते हैं आप लोग, और आपको इंटरफेस दे उसमें। हाँ, ROIP गेटवे पे इंटरफेस दे सकते हैं, VHF हो UHF हो, कोई भी रेडियो हो, एनालॉग रेडियो बेसिकली। खाली वो सिक्योरिटी का थोड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल बेस्ड कम्युनिकेशन है, इसीलिए ये पहले IP में नहीं हुआ रहा था। अदरवाइज इसका प्रोटेक्शन पाथ भी अभी आपको नेक्स्ट, जैसे अभी हम लोग का फाइबर है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन पाथ वायरलेस में होगा। कट हो जाएगा तो ये लीनियर पाथ होता है ना, ये सारा जो स्टेशन का हमारा